वेलकम टू एजीपीजी स्टडी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. सो लेट गेट स्टार्टेड. एक्सपेरिमेंट सेकेंड. Calculation of erosion index by EI30 method. Objective. From this study, students are able to know about EI30 index method and its calculation procedure. EI30 index method. This method was introduced by Wischermann in 1965 एंड ये मेथड बेस्ड था 30 मिनट्स की मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी पे, जिससे कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं सॉयल लॉस को. ये ग्रेटेस्ट एवरेज इंटेंसिटी एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि 30 मिनट्स में हम रेनफॉल को रेन गेट चार्ट की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं एंड लेटर कन्वर्टिंग सेम इंटेंसिटी. सिंपली मीन्स इरोसिविटी इंडेक्स EI30 is commonly used in the universal soil loss, जिसमें कि हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर हिल स्लोप से कितना सॉयल लॉस हुआ. और EI30 मेथड को टोटल काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम 30 मिनट्स की रेनफॉल से इसको कैलकुलेट किया जाता है EI30 इंडेक्स मेथड को. एंड द यूनिट ऑफ EI30 इंडेक्स इज मेगा जूल millimeter per hectare hour. Fisherman give following equation for calculation of kinetic energy. Then here are 3 points, you read it. Then limitation of method. EI30 index method was developed under American condition and is not found suitable for tropical and subtropical zones. Calculation procedure. Rainfall heterograph is divided into increments where intensity is assumed to be uniform rainfall. Second, unit energy for each increment shown in column. Third, rainfall energy for an increment in the product of energy and the volume of rainfall increment. Fourth, total energy for the stroma and the sum of the energy for each movement or 8.64 megajoule per hectare in this case. Maximum 30-minute intensity EI30 is equal to 54 millimeter per hectare. Millimeter per hour. Therefore, EI30 for the stroma is 466.56. Experiment 3. Objective. Universal Soil Loss Equation USLE. Estimation of soil loss. इसमें ये वर्ड सही समझ में आ रहा है. यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन मीन्स एक लैंड या एरिया से जो भी सॉयल लॉस होता है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए एक इक्वेशन बनाई गई है. और ये इक्वेशन USDA ने दी थी. I'm tell you what is USDA is a United States Department of Agriculture. This is the very renowned Department of Agriculture. Then soil loss equation was given by Wishman and Miss Smith Nair in 1995. The one was published in year 1973. This equation was designed by USLE 8 and in brief it is now as USLE. ये बहुत एक सिंपल पावरफुल टूल है जिससे कि हम सॉयल लॉस एक एवरेज अमाउंट में सॉयल लॉस को हम मेजर कर सकते हैं. द इक्वेशन इज कैपिटल A is equal to RKLSCP. The formula is A is equal to RKLSCP. यहाँ पे K होना चाहिए instead of U. And the unit of soil loss is total A is equal to ton plus acre plus year. This is very important because this is the unit of amount of soil loss. That means एक साल में एक एकड़ से कितना टन सॉयल लॉस होता है. Then capital R is equal to
Rainfall erosivity factor, which is measurement WE. This is K. Soil erodibility factor, capital S is equal to slope gradient factor, and C is equal to cover or crop rotation. Capital P is equal to erosion control practice or soil conservation practice. Rainfall erosivity factor means the factor which increases soil erosion. It is referred to rainfall erosivity index, which express the availability and rainfall to erode the soil practice for unprotected field. In the field which there is no plants or grass, that is unprotected field. So there is more chance to soil erosion. Then soil erodibility factor. Erodibility means the factors which reduces soil erosion related to various soil properties by which a particularly soil becomes erode. Slope length and steepness factors. इसमें कि पर्टिकुलर सॉइल की पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिक स्लोप लेंथ एंड स्लोपनेस ऑन स्टेप ग्रैंड सरफेस द रन ऑफ गेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रन ऑफ रेट. Then slope steepness factor. Steepness of land slope influence the soil erosion. जो लैंड स्लोप की स्टीपनेस होती है वो सॉइल इरोजन को प्रभावित करती है इन सेवरल वेज. इन जनरल द स्टीपनेस ऑफ स्लोप इंक्रीज द सॉइल इरोजन. Slope length factor. It is the horizontal distance from point of origin of our land flow to the point. Crop management factors. First, kind of crop, quality of crop. Third, second, quality of crop. Third, growth. Fourth, water used by growing plant. Soil conservation practice factors. Defined as the ratio of soil loss under a given conservation practice to the soil loss from up and down slope. Experiment 4. Objective. Measurement of soil loss from the field by using multiple slot device. मल्टी स्लॉट डिवाइस का यूज करके हम सॉयल लॉस को कैसे मेजर कर सकते हैं. सो इट इज वेरी हेल्पफुल. It is very useful for measuring of rainfall. It can measure of runoff and can estimate soil loss from field. First, second, and third. First is collection test. Collection test. It is used to collect the runoff. इसका यूज हम जो भी नहीं. It is used to collect the runoff from the plot. मीन्स प्लॉट से जो भी हम रन ऑफ कलेक्ट करते हैं उस वाटर को एक कलेक्शन टैंक में डिस्चार्ज करते हैं. The took have 4 compartments of different dimension various according to plot size, probable runoff area. Second, slot device. Slot device with number of slot is useful for experimentation in which one slot is collected to as a term tank. One slot को हम term देते हैं is collected to term tank. The divisor is always provide the add number of slot. The number of slot divided into per volume of water. पर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग ये स्लॉट डिवाइडेड है. It is to be collected from the experimental longer the quality runoff more of the slot. It is also covered with cap on the top. Christian tank collected to slot divisor to collect. जो भी स्लॉट डिवाइजर से जो भी कलेक्ट हुआ है रन ऑफ वाटर उसको हम फाइनल मेजरमेंट में फॉर फाइनल मेजरमेंट द कैपेसिटी ऑफ क्वेश्चन टैंक. प्रोसीड्यूर क्या है. प्रोसीड्यूर सेलेक्ट द पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम वेयर सॉइल लॉस इनटू द मेजर. एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करते हैं जहां से सॉइल लॉस होता है. सेकेंड, जनरल डायमेंशन ऑफ फील्ड आर सेलेक्टेड 15 multiply 46 meter the plot boundary by assessing GI sheets along. Third, then even of collection channel constructed to divert. भी कलेक्शन चैनल जो बनाए जाते हैं
to divert the runoff water towards collection tank. Toward collect tank. Pipe fourth. Pipe is used to convey the runoff water into the tank, and a flawed pit is walled to it to collect runoff water. Collective of runoff volume. The formula of runoff volume is runoff volume water in question tank to measure by using formula cap, capital V is equal to volume of runoff water meter cube to the radius of question tank in meter. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.